ठीक है हाँ अरे पूजा हाँ पूजा मत कहलु ताकर के So, good evening students and welcome to Oavs Tgt English. Welcome to Vidyakar online classes where we are going to, we have introduced a new new course for Oavs Tgt English papers. Okay. So, since the government has been very kind and generous, बहुत दयालु ही कि गुड़ाए पोस्ट सबुले बाहर ची बर्तमान. So, giving you all an opportunity to dream and make your dream come true. So, to dream and to make your dream come true, the basic most important thing which you ought to do, you should and you must, सेटा होची hard work. Hard work छड़ा किच्छी तारा substitute नहीं. Artificial intelligence तारा substitute नुहे, किच्छी तारा substitute नहीं. ये बड़ा hard work. Only pure hard work will land you, will help you in reaching your goal, in attaining your goal and reaching your destination successfully. Okay. So, good evening everybody. I am very happy to see you here. Okay. Now, all of you must be knowing that in TGT जो माने naturally जो माने prepare करछो जो माने आशा करछो तो immediately तुम्हारा advertisement बाहर लक्षण का तुम्हें prepare करनो आगुरु mind रखुछो. So TGT teachers मानक पे you know there are total 200 marks. The 200 marks ru 100 हैला compulsory जोटा which is further divided into part 1 and part 2. Part 1 रहला ओडिया और English qualifying 20-20-40. GK और reasoning है 30-30. So 20 plus 20, 30 plus 30. ये है part 2 paper 1 रो और इटा है part 1. English ओडिया ये है GK reasoning. 100 marks ये है. तापर है सब्जेक्ट पेपर तो तुम पेडागॉजी रहिबो और इंग्लिश लिटरेचर रहिबो. ये जो सब्जेक्ट में अप्लाई करछि जे इंग्लिश टीचर होगा चाहूची से इंग्लिश लिटरेचर नेचुरली जानी थिबो, इंग्लिश लैंग्वेज भी भल जानी थिबो बिकॉज लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स नाउ. आगुरु लैंग्वेज लिटरेचर माने डिफरेंस एत नथिला बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज और लिटरेचर अलग अलग हे गलानी. सो यू ऑट टू हैव कॉम्पिटेंस इन लिटरेचर एज वेल एज इन लैंग्वेज. Pedagogy rahila history of language and how to teach language skills and what a second language tapare second language learners aptitude, how to teach them, bilingualism, all these things are there. So in total ye hela 100 marks. So 100 ye hela
100, totally 200. Okay, now this is your syllabus. Okay, so you have literature, you have Shakespeare's works, romantic period. So romantic period माने ये जो लिखा है etc. Shelley, Wordsworth, Keats, Coleridge, Byron, etc. हम माने मु एपन तो बुझिनी, मु निजे बुझिनी, तो मु कौन कही? Because romantic period माने कौन? Romantic poetry अच्छी. So romantic poetry रहला माने etc. माने all the others novel को छाड़ देला. Okay, that is what I precisely understand. That is romantic poetry, the older romantics and the younger romantic poets. 19th and 20th century American English literature. Again, this is also pura lekha hochi very broad. 19th and 20th century English literature. Robert Frost, Hemingway, Ted Hughes, Whitman, Hawthorne, Emily Dickinson, Bernard Shaw. ता माने कौन? 19th century American literature, 20th century American literature, 19th century British literature, 20th century British literature. Literature माने poets, novelists, dramatists. तीन जन जाक included. So this is pretty vast, very vast मु कहिबे एटा को. काहे कि ना 19th century the American को तमे जिवो, you will have Herman Melville, you have Nathaniel Hawthorne, you have Emily Dickinson, poets, novelists. 20th century you have the 20th century American dramatists, American poets, American novelists. एपटे 20th century British literature, British poets, Yeats, Eliot सब आसी रहिले सेते. G.B. Shaw, एमन समस्त जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑस्कर वाइल्ड, ये समस्त आसी गले ए जगरे. And also the novelists. So एटा होची very vast. खाली example देछि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, टेड ह्यूज, व्हिटमैन, हॉथर्न, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ etc. ता माने कोन? The list goes unending. The list goes unending. ता भीतर सबु कवर होछि. Then we have modern Indian writing in English. Modern Indian writing in English माने 1920s, because Indian English literature started from practically कहले 1920s. से मधुसूदन दत्त, तोरू दत्त एमान को छाड़ा. they were जो जिनस लिखुतले, it was just the beginning, but it had not established itself. जेमती तुमको respect देला भलिया position ए नथिले से माने. So 1920s रू आरंभ हला Indian English literature. When we had the famous trio like R. K. Narayan, Raja Rao and Mulk Rajanand. Jemti, the four pillars of, the four wheels of the British novel, 18th century Kualtula. Henry Fielding, Samuel Richardson, Lawrence Sterne and Tobias Smollett. Jemti, the three pillars of English, Indian English writing. R. K. Narayan, Raja Rao and Mulk Rajanand. So say to start her. एमान pre-independence type period writers. Then we have the post-independence writers. So post-independence writers को माने असल independence परे जो माने till date. Anita Desai, Arun Joshi, a host of them, Vikram Seth, Arundhati Roy, Anita Desai, Jhumpa Lahiri, में समस्त आसिबे सेतरे, because they are Indian writers in English. V.S. Naipaul, diaspora नोंते मन को तो मैं नहीं परिवर्तन कर, because they are also included. Then, like Nissim Ezekiel, K.N. Darwala, Ruskin Bond, R. K. Narayan, Mulk Rajanand, Tushwan Singh, etc. Then modern writing in English from different parts of the world. Again, modern writing in English from different parts of the world. It is just like the world literature. Australian literature,
then Nigerian, African, European, August Strindberg, Brecht, Henrik Ibsen, Kafka, Albert Camus, Dostoevsky, ये सब but ये सबू आसिला परे भी now let me finish it, then I will tell. आमर introduction class. Okay, तापर हला then pedagogy रहिला. The pedagogy portion टा रहिला सेतरे मु देखथली English language or history, how old it is, modern English, middle English, old English, middle English and modern English. Then how English became a global language. What are the problems the second language learner faces? So what are the 4 language skills? LSRW, listening, speaking, reading and writing. So ए गुड़ाक अच्छी प्लस अन्य जोड़ा पूरा टेक्निकली जो माने एजुकेशन टीचर्स पूरा प्योर पेडागॉजी रे रही. Now I have what since you all are applying for TGTs, तो TGT माने कौन 10th क्लास पर्यंत पढ़ेबो माने PGT माने 11th 12th पढ़ेबे, TGT माने अप टू 10th पढ़ेबे. तो 10th क्लास स्कूल पिलांग पई एते गुडी जिंस चक्र कोनसी देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड, किंतु ताको रखाई छि काहे की एथि पे रखाई छि they want to choose the best. आम कंट्री 140 crore देश, सो ये 140 crore देश रे यूथ परसेंटेज 65 crores समस्त पाठ पढ़ी की बस and everyone is trying to be a government get a government job. 1990s or 2000 देखी 2000 early part of 2000 early part of the 21st century. पिला माने गवर्नमेंट चाकरी गवर्नमेंट गोड़ो था तांक पछे चाकरी छाड़ी की प्राइवेट सेक्टर पढुथले. But suddenly when they had that nightmare in the private sector, work schedule, life, uncertainty, any moment you will be fired. Look, one phone challe stability ko. Again they turn to government job. But समस्त one only dream होचा मतलब government चाकरी. तो government चाकरी limited, applicants बहुत. तो मु सब बेले गोटे जिनस कहे देख माने मु कहे पिलां को सब बेले that is what I have felt. Any entrance examination हो जेकोनी से any examination चाकरी हो पा एंड माने तमरा नीट हो कि जेई हो एटा होची process of elimination. It is always a process of elimination. Process of elimination. Judicious selection, lavish rejection. Judicious selection, lavish rejection. जेते को काटी पारिबो तांका भीतर बेस्ट को judiciously select करे so that best पिला selected ही करे. Best पिला selected and particularly it is very essential काहे कि गवर्नमेंट फील करूची जे सब गवर्नमेंट सारा इंडिया रे फील करछंती कि पिलार फाउंडेशन टा किए क्रिएट किए हु बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ अ चाइल्ड और बॉयज एंड गर्ल्स और men and women. They are the teachers. They are the teachers. So if the teacher is substandard, pila bhi substandard. Paribo na nahi. Very natural. Teacher jodi substandard hela, pila substandard hebe. Teacher jodi brilliant hela, pila bhi brilliant. And so teacher is to impart education to the children. तेणु बेस्ट माइंड को आनिया को हेले make the competition tough so that तांका भी तो बेस्ट पिला सिलेक्टेड हो सेति पई even if it is a TGT तेणु एई भडा सिलेबस से मन रखछ
जे गोटे पिलाटे जे बीए ऑनर्स करिछि इंग्लिश रे पोस्ट ग्रेजुएशन करिछि इंग्लिश रे जेतिक सिलेबस प्रेस्क्राइब टेक्स्ट अच्छी whether the concerned student or aspirant or candidate knows something about it or not. There are students mu dekhichi in my lifetime तांको पचारे संके जॉन डन बिलोंग्स टू द 19th सेंचुरी ए भला विचित्र आंसर सब सो दैट इज व्हाई एगुडा को सब प्रेस्क्राइब है तो जो माने वेल प्रिपेयर्ड जो माने पढ़ी 5 इयर्स जो माने इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएशन करछंती 5 इयर्स मन देकी पढ़ी फॉर देम इट्स ए बाई हाथ का खेल बाई हाथ का खेल फॉर देम they can easily qualify, they can easily crack, understand, not difficult at all. जो पिला टोटली पढ़िनी से पिला कौन किन करिवो कि पाई कंपटीशन ता टफ हे जाउची हम भाबिले लक्षे मेडिकल सीट इंडिया रे गवर्नमेंट प्राइवेट मिसिकिन 25 लाख पिला परीक्षा दउछ प्रति 25टा पिला रे गोटे सीट कैन इमेजिन द काइंड ऑफ कंपटीशन so obviously the best is selected. That is the reason why the competition is tough. You know, जो माने it is my advice. मु काहा को discourage करूनी, काहा को मु demotivate करूनी. Rather I am motivating people. I am rather encouraging students. कि जहाँ है ची अतीत रे बा past रे forget it. ताको पूरा मुंडरू पोछि दियो. Start your can तुमको 42 years जे गवर्नमेंट चांस देजी. You can go on applying you can go on aspiring for a government job. You know, with due sincerity, honesty, पूरा पूरी मोटिवेटेड जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रिजल्ट बाहरला मु खाली बहुत माने मिरर नाउ टाइम्स ऑफ इंडिया रे देखुची से पिला मानकर जे टॉप करिछि जो पिलाटी टू फर्स्ट हेछि से पिला फर्स्ट चांस है ना आईआईटी प्रोडक्ट दिल्ली आईआईटी कानपुर आईआईटी प्रोडक्ट माने किछि कम नो एक्सेप्शनली ब्रिलियंट से फर्स्ट चांस रे से प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर पा नथला तापर आसला 236 रैंक 236 रैंक रो टॉपर हैला केनते हैला आई यूज्ड टू मोटिवेट माय सेल्फ कारण निजुक निजे केबे भाबियो जाय हैलानी का हबो नै निजुक निजे मोटिवेट करी चलिबो गो ऑन थिंकिंग जो परीक्षा दोच तुम स्ट्रेंथ को देख तुम वीकनेस को देख मोर मु कोथरे भलो कोथरे मोर प्रॉब्लम अछि को एरिया रे मोर प्रॉब्लम होछि ताक मु सॉर्ट आउट करिवि दैट इज व्हाट आई सेड व्हाट ही सेड a smart preparation is essential tenu what I want to say is what is a smart preparation for you all तम पे स्मार्ट प्रिपरेशन है एत्ते गुडी जिंस तमर अच्छी एत्ते गुडी जिंस जो अच्छी से जिंस गुडा करे तमर जो गुडा सिलेबस प्रेस्क्राइब हेची जो टेक्स्ट गुडा ऑनर्स हो पोस्ट ग्रेजुएशन हो जो गुडा तमर सिलेबस प्रेस्क्राइब हेची केवल से गुडा टिके भलरे पढदो क्वेश्चन से थ्रू ही आसी क्वेश्चन से थ्रू ही आसी डोंट थिंक तमर जे तमर अल्बर्ट के हमर आउटसाइडर टा अछि आउटसाइडर रो क्वेश्चन आसी अन्य गुडा का आसीबन तार मेथड सिसिफस एसो इनसर कोड किछ आसीबन सैमुअल बेकेट रो तमर आसीओ वेटिंग फॉर गोदो बिकॉज़ बेकेट रो वेटिंग फॉर गोदो रे ही प्रेस्क्राइब जे सिलेबस रे आउ मैक्सिमम है गोटे है एंड गेम तो जेति के सिलेबस प्रेस्क्राइब हेची सेही गुडा को भल देखि दो अन्य गुडा करे खाली दिया आसना हेची किंतु क्वेश्चन आसना प्राय क्वेश्चन प्राय आसना अंडरस्टैंड तो तमर हैला शेक्सपियर प्रथम हैला शेक्सपियर्स वर्क English literature minus Shakespeare, unimaginable.
It is simply unimaginable. England रे जो 20th century सरीला 1999 रे 21st century आरंभ होला 2000 रे तो सब कंट्री कहा जाउथला जे ए मिलेनियम रो who is the one the country is proud of. तो सब बेले इंग्लैंड रे 16th century onwards एबटू शेक्सपियर आसिलेनी तांका सब मिलेनियम रे तांका the only the person whom they are proud of is Shakespeare. तो शेक्सपियर आइडेंटिटी गोटे से तांकर चलला तो 20th century 21st century रे खाली who could be there because मैं पढ़ी चिली गोटे न्यूज़पेपर से माने कहले जे ना हमर भी we also have another person who we are proud of. So who is that other person? The other person is apart from Shakespeare. Shakespeare को छोड़ा व्यतीत आउ किए? That gentleman is Sir Isaac Newton. Sir Isaac. So these people, they make their country proud. These people make their country proud. So English literature पढ़िबो without any knowledge of Shakespeare has no the literature because William Shakespeare हमरो हरे रहिला कोन works of William Shakespeare कोन so Shakespeare as we all know a great dramatist as well as a great sonneteer. पोएट्री पर जति कमांड थिला दखल थिला ड्रामा रे ऊपर भी तांकर सेति दखल था शेक्सपियर किंतु ई शेक्सपियर जो तांकर थिला एते लेखि छंती केते फॉर योर नॉलेज फॉर योर इंफॉर्मेशन Shakespeare has written 37 plays. 154 एटा को पूरा मन रखे. You have to remember this very much, very well. That Shakespeare has written 37 plays and उस कहीं के तो had written कहनी has written कहे सब बड़े because he is going on तांकर प्ले गुड़ा को still भी लोक मैंने ताको फिल्म करचंती प्ले करचंती ताको निजे निजे कंडीशन अनुसार चेंज करी करी चलछन 37 plays and 154 sonnets तो ता माने कोन गोटे पिलाटे 37 plays को मन रखिबो नो किछे दरकार नै 37 because Shakespeare has written tragedies. अच्छा शेक्सपियर को प्ले को प्रथमे who brought into the limelight? It was during 1623. It was in 1623 the first folio was published. The first folio was published. folio का कोनती गोटे पेपर टाइमती ताको थरे भांगी देले जहा सेटा हला folio. क्वार्ट गोटे अच्छी क्वार्ट माने से दीटा को आउ थरे भांगी देले जेमती हबो हमर छोटिया स्कूल के जो खाता सो थाए दैट इज कॉल्ड क्वार्ट. तो फर्स्ट फोलियो ता पब्लिश्ड हला काहे कि ना ही हैड टू फ्रेंड्स ये शेक्सपियर को मरिबा परे शेक्सपियर डाइड इन 1616 so Shakespeare died in 1616 तांकर डेथ रो 7 इयर्स परे 1623 रे बिकॉज से माने कोन कि लोक मानकर शेक्सपियर कर जो सेते बेले लिखुथिले आ शेक्सपियर सेते बेले प्रिंटिंग प्रेस थिला प्रिंटिंग फैसिलिटीज थिला किंतु कोन कि ना एमान सब के सेते बेले जो कॉपीराइट नथिला यही आनी पर नथिले तेनु कोनसी गोटे सपोज जो गोटे प्ले होची एक्टर्स माने अछंती तांका पाके थाए डायलॉग्स गुडा कॉपी थाए तो ताकू एमते आनी करी लोक माने करी शेक्सपियर सो इट ऑथेंटिक बोली जणा पड़ नथिला ये तो शेक्सपियर केतरा लिखछन आउ के केतरा लिखछन से लोक जानि पड़ नथिले ताके ऑथेंटिसिटी किछि नथिला
तो तांकर दी जन फ्रेंड वन इज हेनरी कॉन्डेल कोटी डबल एच एल अच्छी कोटी गोटे एल अच्छी आ गोटे जॉन these two friends Henry Condell and John Hemingers they decided जे आमे they were colleagues of Shakespeare good friends of Shakespeare से परिगला पर they said such a great dramatist he was so popular his plays were so popular लोक सब बड़ा हाउसफुल बॉक्स ऑफिस हिट एबेका टर्म में तुम कहबो बॉक्स ऑफिस हिट तो सेते बेले तो तांकर प्ले गुडा को सो दे मैनेज टू कलेक्ट 36 प्ले करके से माने ताको फर्स्ट फोलियो करके पब्लिश कारण बिकॉज मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ लेखा सब ये हाथ लेखा किए लिखी किए जानला वेदर ये शेक्सपियर लिखि कि मार्लो लिखछंती सो बहुत दिन चलला ये शेक्सपियर को प्ले गुडा सो मार्लो लिखछंती बिकॉज किछि नथला ऑथेंटिक किछि नथला कॉपीराइट नथला से समय so that was the difficulty एमाने मैनेज करिकरी तांकर 1623 रे फर्स्ट फोलियो को so एमाने तांकर कैटेगराइज कर देले ये जेमती कला कारण शेक्सपियर को चली तांकर एडिशन चली so एमाने कैटेगराइज कोन कले एमाने फर्स्ट फोलियो रे they categorize Shakespeare's works or plays into 3 categories देखले तीन कैटेगरी कर they divided the entire all the 37 plays into tragedies comedies and history plays later on आउ जो माने एडिट कले अगेन शेक्सपियर को वर्क को तार सो ना चेंज करी चलले तांकर कहले दे आर प्रॉब्लम प्लेस वन लाइक टेम्पेस्ट विंटर्स टेल आकु से माने कहले से माने ताकू आ गोटे कैटेगरी कर देले प्रॉब्लम प्लेस किए के ताकू रोमांस कहला किए के ताकू ट्रेजिक कॉमेडी कहला तो एमती भाबरे विभिन्न टाइम रे विभिन्न पब्लिशर्स माने पब्लिश जो करछंती ताकू एमती भाबरे एडिटिंग अलेक्जेंडर पॉप भी गोटे एडिशन करछंती शेक्सपियर रिस्टोर्ड सैमुअल जॉनसन भी करछंती शेक्सपियर का बिकॉज सैमुअल जॉनसन का वर्क इज मोर यू नो लाइक he gets it's more and more authentic and Samuel Johnson बहुत चेष्टा करी he tried really hard very hard it took almost 8 years then से चेष्टा कले preface to Shakespeare लिखला बड़े जितने शेक्सपियर को ओरिजिनल टेक्स्ट संगे जितने क्लोज से हेई पारिबे कारण आगु सब मिलावट थिला अन्य जगह रे अन्य जो लोक मन लिखथिले तो बहुत लोग तांग परस्पर को क्रिटिसाइज करंती तो जॉनसन ट्राइड as far as possible as it is humanly possible to come closer to the original. This is William Shakespeare. तो ये शेक्सपियर का जो वर्क अच्छी ये शेक्सपियर को वर्क हेनरी तांकर जो अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस की रहिले सब हेनरी 4 हेनरी 5 हेनरी 6 हेनरी 8 ए मानक पर से लिखले रिचर्ड 1-2 एडवर्ड III. So he used to write those history plays. So in what way why Shakespeare became so very unique? तमरो सिलेबस रे एलिजाबेथ माने रिनासा नाही किंतु तमे जदि खाली आइसोलेटेड भाव रे शेक्सपियर को पढ़िबो तमे शेक्सपियर को बुझी परिबन तेनु ओरिजिनली रिनासा टाइम रे जो आसला एलिजाबेथ पीरियड रिनासा परे परे कोन हला ग्रीक और लैटिन लिटरेचर गुडा को इटली देकरी इंग्लैंड रे से पहुंचले तो जो ग्रीक और लैटिन लिटरेचर को लोक माने पढ़िले देखिले तांकर थॉट प्रोसेस सेमानकर अप्रोच टू लाइफ वाज टोटली डिफरेंट very रैशनल
very logical. तेणु रिनासा हला कोन ने गुड बाय टू द मिडिल एजेस, गुड बाय टू द एज ऑफ सुपरस्टिशन, जतले किछि कि तुम रीजन कर परिबनी, खाली ब्लाइंड बिलीफ तुम करी करी चलथिले. तो एटा हला बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज. रिनासा आरंभ हला मॉडर्न एज. लोक माने जोठी कि व्हाई रा यूसेज, व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई देयर इज अ सीजन चेंज. Ptolemaic astronomy जतल कहउतले, what the Ptolemaic astronomy said, Ptolemaic astronomy सेतेबेले कहउतले जे the earth is the center, all the, including sun, everything revolves around earth. ये चलथला. गैलीलियो कहले नो, कोपर्निकस, गैलीलियो नो, it is heliocentric. The sun is in the center of the solar system. सूर्य चारिपटे अन्य माने all the planets are revolving. देखो कितने पूरा opposite, पूरा polar opposite shift है. Earth was the center. So it has middle ages, dark ages, age of superstition. एठु आरंभ हो गला. तो शेक्सपियर तो सेते बळे लोक मान देखले कोन सबुटो सेक्रोसेंट सेक्रेड हैला लैटिन ग्रीक रो सबु मेथड, तांकर फिलॉसफी, तांकर लिटरेचर, तांकर आर्ट, प्लेटो, एरिस्टोटल, यूरिपिडेस, सोफोक्लिस, एस्केलस, एमाने सो जहा कहले सेटा वेदगार. एरिस्टोटल का जो अछि पोएटिक्स, इन एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स he wrote what is a tragedy, essential of a tragedy. So semane कहले dramatic unities, unity of the three dramatic unities. Dramatic unities कौन? Unity of action. So unity of time, place और action. So Greek tragedies रे या होतला. Greek plays गुड़ा के, not exactly tragedies. Greek plays गुड़ा के माने तांकर या होतला. The three unities has to be maintained in order to make it believable, plausible. लोक जिन तक believe कर परिवे. So unity of time कौन? 24 घंटा भी जा हेची. एमती तुम प्ले लिखिबो जो प्ले रे कि 24 घंटा भीतर जहाँ सब हेची, तो लोक विश्वास करबे जे हां ये 24 गोटे दिन भीतर एती काम हे पारिबो. सेटा यूनिटी ऑफ टाइम. यूनिटी ऑफ प्लेस, जदि 24 घंटा भीतर तुम केतेटा जगह जाई परिबो. सेटा साइकिल फाइकिल नथिला, चल चल लोक जाउथि, आइदर घोड़ार जाउथि चली कि जाउथि. तो 24 घंटा भी से गोटे जगह आउ केतेटा जगह दिन भीतर जाई परिबे. तो से अनुसार यूनिटी ऑफ एक्शन प्लेस भी रहा. प्लेस ता कौन ना गोटे टाउन हो बा गोटे गाँटे हो बा यही जगह एतिक एरिया भितर से प्ले तक तुम देखेब. तो यूनिटी ऑफ प्लेस आसला. तापर यूनिटी ऑफ एक्शन. व्हाट इज यूनिटी ऑफ एक्शन? यूनिटी ऑफ एक्शन है देयर शुड बी ओनली वन प्लॉट. प्लॉट माने कौन? प्लॉट इज द सोल ऑफ अ ट्रेजेडी बोली एरिस्टोटल कहले. प्लॉट माने हला कॉजल कनेक्शन. प्लॉट टाको जस्ट एति कि छाली बुझ सब बेले पढुथवा ए प्लॉट ता भारी भलो. प्लॉट व्हाट दीटा प्लॉट. प्लॉट इज हैज अ डबल मीनिंग. प्लॉट माने जम्मी जोत पे लोक माने पागल हैना. आ गुट हला प्लॉट तो ऐसे प्लॉट करछु मो अगेंस्ट रे. बट प्लॉट इन अ ड्रामा, प्लॉट इन अ मूवी, प्लॉट इज व्हाट? इट इज अ कॉजल कनेक्शन.
Plot is a causal connection. So what is a causal connection? Cause, reason, cause ta kon? Cause सबले kon हुए? Effect आसे. Cause और effect. से मते बाड़ेला. Cause, मु भी ताको बाड़ेली. मु काई बाड़ेली? से मते बाड़ेला बोली मु ताको मारली. So causal connection है right. Cause, effect, cause, effect, cause, effect. हे करी entire plot ए to start हैला आरंभ हे एटा हैला end. This is the end. This is the a beginning ru end पर्यंत. आ मझे रहला कोन middle. Any drama, any novel, any film से कौन कहती? गोटे स्टोरी तो ही कहती ना. They tell a story. समस्ते तुम हजार हजार फिल्म देखुच. Hollywood movie, British movie, European movie, Bollywood movies, South and local like regional movies. सबू सिनेमा देख. अल्टीमेटली कौन प्रति फिल्म में गोटे स्टोरी थाए. गोटे स्टोरी ही कहई थाए. अच्छा स्टोरीटा केमती मूव करे? स्टोरीटा मूव करे प्लॉट थ्रू रे. There's a hero and a heroine. There's a two family. There's a boy and a girl. They study together. They fall in love. One family doesn't like it. So cause आरंभ हो गया. But complication आरंभ हो. But they force them to remain separated. Then a villain comes. इताला जिनसे plot ऐसे है कौन? But तापरे next कौन होगा? Next कौन होगा? So ये जो action reaction रे beginning middle end है ultimately the film or the novel or the play ends. Sorry वो. तेणु systematically से play टा से drama टा बा play बा film टा systematically आरंभ रु शेष पर्यंत develop करी जा. तेणु मझिरे जिते confuse हबो readers मानकु बा audience को सेति पई editing करा जाए. एमती भाबरे एडिटिंग करा जाए जोटी कि लोकंकर बा ऑडियंस कर बा जे रीडर पढुची तार कंफ्यूजन हबो. So there is a single plot that is called unity of action. Single plot that is called unity of action. तो से माने BC रे लिखुतिले Aristotle, Aeschylus एमन सब Sophocles. Then think of Shakespeare. The 16th century लिखलेनी. Human beings, jungle they have come to the cities, they have built cities, towns, and lived in communities, knew the value of education, the schools, colleges, universities. So life कितने drastically change है. So लोकों taste accordingly भी change हो. जेते जेते तुम बाहर को एक्सपोज्ड हबो तुमर टेस्ट बदली बदली जीवो तुमर परसेप्शन बदली बदली जीवो तुमर एटीट्यूड भी बदली बदली. शेक्सपियर जेते बडले वेल ही स्टार्टेड राइटिंग प्लेज. सेकंड चैरिटी करी को प्ले लिखुतले सर्टेनली नॉट. गोटे जिनस हला लिटरेचर ताको कुआ जाए Greek period रू right from the ancient days. ସେମାନେ कहते जे literature ର twofold function. Twofold function हला कौन? Delight, entertainment. Entertainment और instruction. Instruction माने किछि moral lessons लोगों को किसी शिक्षा देवो. एंटरटेनमेंट एंड इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्ट माने लोक ताकू देखले ता संग से किछि ता शिखिले. सेटा होची पर्पस ऑफ लिटरेचर. इंस्ट्रक्शन निहाती दरकार. डिलाइट लोगों को एंटरटेनमेंट दबो ता संग से किछि नैतिक शिक्षा भी दबो. सो दैट मनुष्य when the human beings live in the society मनुष्य जो समाज रहे से किंतु भल मनुष्यटा हबो
ए प्ले कौन सब लिटरेचर माने उद्देश्य ऑब्जेक्टिव होची सेटा एंशिएंट डेज ओके सो व्हेन शेक्सपियर रोट शेक्सपियर पर एजुकेशन तो नथिला ताकर एजुकेशन कौन अच्छी बोले किसी कौन ग्यारंटेड ना तो लैटिन और ग्रीक पढ़िबे केमते सोर्स तो सब सही स्टोर हाउस होची सेटा गोडाउन होची सेगुड़ाक सेठु जिनस आसीबो किंतु शेक्सपियर हैड नो नॉलेज ऑफ लैटिन एंड ग्रीक मान जेमती इंग्लिश लोकन पे लैटिन और ग्रीक कौन इंडिया रे लोकन को पे जेमती इंग्लिश ता तांको इंग्लिश लोकन पे सेही स्टेटस ता हला लैटिन और ग्रीक तो जो माने बहुत भल पढ़ती माने भल भल स्कूल को जानती जमती इंग्लिश मीडियम स्कूल जो माने इंडिया रे पढ़िले से माने इंग्लिश भल कहि पारले सेमती तांकर जो माने सब इंग्लिश मीडियम स्कूल गुड़ा सब प्राइवेट स्कूल थिला तेणु प्राइवेट स्कूल जो मान पैसा थिला से माने प्राइवेट स्कूल को जाउथले अन्य माने सब गवर्नमेंट स्कूल पढ़ुथले सेमती इंग्लैंड रे भी जो माने पैसा थिला से माने सब ग्रीक लैटिन पढ़ुथले आ जो माने पैसा नहीं तो से माने इंग्लिश पढ़िले +2 रे most of you must have read that on examination Winston Churchill करो पढ़ी थी समस्ते तो on examination में चर्चिल कौन कहते कि मु तो भल स्टूडेंट नथिली आई वाज नॉट ए गुड स्टूडेंट सो आई वाज नॉट भल स्टूडेंट को लैटिन ग्रीक पढ़ाते बेस्ट स्टूडेंट मान को लैटिन और ग्रीक पढ़ा जाए so that it became a blessing in disguise for me because मु लैटिन और ग्रीक पढ़िया मतलब स्कोप मिललानी मते सिलेक्ट करागलानी so मु concentrate कले एंटायर इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज ऊपर so I knew about the tidbits of grammar I learned everything तापर देखला बेलको समस्त मते ही पचाले जे इंग्लिश रे they asked me I became an English teacher तांको बळे तांको पई so I think most of you must have read on examination so शेक्सपियर सेमती लैटिन ग्रीक पढ़ी नांते तो केमती से पाइले इंग्लैंड रे कोन हला लोक माने से लैटिन और ग्रीक को इंग्लिश से ट्रांसलेट कले शेक्सपियर read those English translation the जो English translation Aristotle होंतु एस्केलेस होंतु सोफोक्लस होंतु आंकर English translation से पढ़िछन ताकू ही पढ़ी करी he was a genius जेमते आमे सब रेसिपी थाए यूट्यूब रे देखतो रेसिपी तो मैं देखि देला समस्त एका रेसिपी कर समस्त टेस्ट भलो हबो कि जे बढ़िया कुक से रेसिपी रे एमती टिक्की कोन कर देबे जे देखला को एक्सेप्शनली से आर टेस्ट अन्य मान टू टोटली डिफरेंट हो जाए दैट इज बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन क्यूलिनरी एक्सपर्टीज जो लोक यूनिक करि पारे तार से एक्सपर्टीज ता अछि से इंजेन्युइटी ता अछि यूनिकनेस ता अछि एंड शेक्सपियर हैड दैट यूनिकनेस एठी सेठी जिंस आणुथले माने कॉपी करथले किंतु ताकू तांको टाइम रो इंग्लिश सोसाइटी ब्रिटिश सोसाइटी जहाँ था इंग्लिश सोसाइटी जहाँ था लोकंकर एटीट्यूड जहाँ था लोक जो भाया भाव चाहूले टेस्ट जहाँ था समस्त टेस्ट को केटर कला भाया टेस्ट को सुहाइला भाया सब कैटेगरी लोक गरीब मेकानिक्स पुअर पीजेंट्स फार्मर्स नोबलमैन समस्त अलग अलग प्रकार डायलॉग भर्ती करके ब्यूटिफुली से मिसेकरी कले so each his plays appealed to one and all सब कैटेगरी लोक माने ताको एंजॉय कले because he had that he was a genius से जिंस को से एमती भाबरे चेंज कर देले लोकंकर टेस्ट अनुसार ये people remembered this man शेक्सपियर लैटिन ग्रीक न जानी केवल ट्रांसलेशन पढ़ी कि से कले हाउ शेक्सपियर बिकेम सो ग्रेट सब बड़े जीनियस था तमर भितर जो जिनसटा अच्छी व्हिच इज गॉड गिफ्टेड तो शेक्सपियर वाज गॉड गिफ्टेड समस्त गॉड माने समस्त जमते हम क्रिकेट देखुछ समस्त सचिन तेंदुलकर होछंती समस्त कोन विराट कोहली होछंती 140 कोटी लोक भीतर गोटे गोटे बाहर कहीं जो मान भीतर से गिफ्ट टा अच्छे
and that is God's gift. जिते जहाँ ट्राई कर से जो जहाँ पाखे से गिफ्ट अच्छी और से गिफ्ट को सही इस्तेमाल करिछि से लाइफ रे एक्सेल करिछि एंड साइमल्टेनियसली ता संगे दरकार हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन एंड शेक्सपियर हैड ऑल दिस थिंग when you are talking about when you are dealing with Shakespeare सब बेले शेक्सपियर को चारटा ट्रेजेडी की भलरे मन रखते ओथेलो किंग लियर मैकबेथ एगुड़ा को एंड ओथेलो किंग ओथेलो मैकबेथ हैमलेट एंड किंग ए चारिटा जंग ट्रेजेडी को पूरा स्टोरी गुड़ा को मन रख देथो आ तांकर जो मेजर कैरेक्टर गुड़ा को जेंति मैकबेथ रे लेडी मैकबेथ मैकबेथ द थ्री विचेस स्टोरी पढ़िबो कान मैकबेथ थला सिलेबस रे थिला सेमते हैमलेट को कला बेले तो हैमलेट चारटा जो मिनिमम तमे 5 जन को मन रखिया पड़िबो हैमलेट क्लॉडियस जर्ट्रूड हैमलेट्स मदर क्लॉडियस हैमलेट्स अंकल दादा ओफेलिया हैमलेट्स beloved and Polonius ओफेलिया बापा सेमती ओथेलो कला बेले मिनिमम मन रखा पड़ो ओथेलो और डेस्डिमोना यार ओथेलो डेस्डिमोना विलेन होची इयागो ए तीन जन को मिनिमम जानी थिबा दरकार फुल स्टोरी जानिबो ए कैरेक्टर मान को जानि तांकर फेमस कोटेशन व्हिच वी आर गोइंग टू डू इट इन दिस क्लास in this program which we are launched in this program we will be doing those things understand so today what I have was just an introductory class so I wanted to interact with you talk to you find out your interest and evaluate your degree of sincerity, how sincere you are, how committed you are, how determined you are to crack the TGT entrance examination. Okay. Hope I have managed to shed some light. Now tell me, did you find the class interesting or not, of some help to you or not? Is it interesting and beneficial or not? Well, अब तो अच्छी क्लास हबो tell me पिला माने कुआ कहला I will wind up एकदम माने दिल खोल के माने absolutely with honest give a honest feedback give me a honest feedback do you find it beneficial or not माने आकु हम करबा ना अने गुडा सब anyway thank you very much see you sometime later